Income tax for BCom 2024 to 25 assessment year. Already I have completed 18th problems. Now today I am discussing 19th problem. For the previous year 23-24. 24 we are in now 24-25 no. So this is our assessment year. 23-24 is the previous year. Mr. Vasudev Nayak income in India is 7,20,000 and in the foreign country 12 lakhs. In the previous year, in the year 23-24, this SSC Vasudev Nayak in India he earned 7,20,000 rupees and in foreign country he earned 12 lakhs rupees. It's clear? Till now 18th problem we didn't come across with the foreign country income. This is the new point is given in this problem. Calculate tax liability under old tax regime in the following situations. Under old tax regime only, under two situations we have to find the problem. If his residential status is resident and if his residential status is non-resident. If he is resident and non-resident, next topic I am going to discuss in detail regarding the resident and non-resident. It's clear? Now first point what we have to discuss, if he is a resident. So Mr. Vasudev Nayak, he is a non-senior citizen. He is a non-senior citizen. If nothing is mentioned, age is not given, we have to assume as non-senior citizen. Residential status is resident. This is the point, first bit, resident. If income 7,20,000 and foreign income is 12 lakh rupees. So total income taxable. So the SSC, if he is a resident, his Indian income and foreign income both is taxable. It's clear? That is the difference, resident and non-resident. If an SSC is a resident, his Indian income and foreign income both is taxable. So total income will be 19,20,000. Under old tax regime, no, 2,50,000 is the exemption for the non-senior citizens. So up to 2,50,000, 2,50,000 is exempted. Tax rate will be nil. Tax amount will be nil. 2,50,000 1 to 5 lakhs income will be 2,50,000. On that 5% 12,500. On this you have to calculate 2,50,000 into 5% 12,500. Now 5 lakh 1 to 10 lakhs the difference is 5 lakhs rupees. इन दोनों को माइनस करना है. If you deduct this, you will get the difference. Then 20% on 5 lakhs rupees, it is 1 lakh. 1 lakh, 10 lakhs, 1 to balance, 9,20,000 it has given, no? 19,20,000. So already 10 lakh it has over. Total income is 19,20,000. Already we have calculated till 10 lakhs. So 9,20,000 will be the balance. On this balance we have to calculate 30%. This is the slab rate. According to slab rate, the income if 2,50,000 exempted, 2,50,000 1 to 5 lakh 5%, then 20%, then 30%. This is the slab rate you have to remember. Already we have done in more problems, no? So 30% we are getting 2,76,000. So 3,88,500. Now tax on total income is 3,88,500. Health and education cess is 4%. This is the compulsory 4% health and education cess. So 3,88,500 into 4%, 1,15,540. So total tax liability for a if the SSC is resident, then 4,04,040 rupees. It's clear? Once again I will repeat it. Mr. Vasudev Nayak अगर मेंशन नहीं करे तो नॉन सीनियर सिटीजन है, उन्होंने अपने को 2 बिट मालूम करना है. अगर उनका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है तो कैसा, अगर नॉन रेसिडेंट है तो कैसा. ठीक है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसा मालूम करना, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक. इनकम, दिस इज इंडियन इनकम. इंडियन इनकम इज 7,20,000. इंडिया में उन्होंने 7,20,000 अर्न करे, फॉरिन में उन्होंने 12 लाख अर्न करे प्रीवियस ईयर में. तो अगर एसएससी रेसिडेंट है तो उनकी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों का भी टैक्स पे करना पड़ता है उनको. इट्स क्लियर? अगर रेसिडेंट है बोल के अपने को क्वेश्चन में मेंशन करे और इंडियन इनकम दिए, फॉरेन इनकम दिए, तो दोनों इनकम का भी टैक्स पे करना है एसएससी को. इट्स क्लियर? नो. नाउ अब 19,20,000 का ओल्ड मेथड बोल के अपने को मेंशन करे तो नॉन सीनियर सिटीजन का 2,50,000 तक नील रहता. 2,50,000 1 to 5 लाख 2,50,000 डिफरेंस रहता. उसका 5% निकाले तो 12,500. फिर 5 लाख 1 से 10 लाख तक 5 लाख डिफरेंस होता. 20% 1 लाख. 10 लाख
टू बैलेंस 19,20,000 है, 10 लाख तक अपन ऑलरेडी देख लिए। अब बैलेंस कितना रहता, 9,20,000 पे 30% इंटरेस्ट लगता, टैक्स लगता। सो 30% कितना आया, 2,76,000। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट 3,88,500 है। ये टैक्सेबल अमाउंट पे उनको 3,88,500 पे 4% कंपल्सरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना रहता। सो दैट इज 15,540। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 4,04,040 रुपीज ओल्ड मेथड में उनको नॉन सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट अगर है तो इतना टैक्स पे करना है। अब यही प्रॉब्लम में अपने को सेकेंड बिट मालूम करो बोल रहे हैं, अगर मिस्टर वासुदेव नायक अगर नॉन रेसिडेंट होते तो कितना टैक्स पे करना रहता था उनको। इट्स क्लियर नो। सो इफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट, अगर उन्होंने नॉन रेसिडेंट है, इफ ही इज नॉट नॉन रेसिडेंट ही हैज टू पे टैक्स ऑन द इनकम अर्न इन इंडिया ओनली, दैट इज द डिफरेंस। It's clear. That's why each and every problem is important. At least once you listen to my all the videos. It's clear, no? If foreign income, if it is given, if he is resident, Indian income and foreign income both is taxable. With a single word, the whole problem will change. Now, if he is non-resident, only Indian income will be taxable. Foreign income we should not include in that. It's clear, no? He has to pay the tax on income earned in India only if his residential status is non-resident. So in the previous problem, 19,20,000 we have calculated tax liability. But if the assessee is non-resident, we have to calculate tax liability on Indian income, that is 7,20,000 only. It's clear, no? Now income up to 2,50,000 nil, 2,50,000 1 to 5 lakh 5% he has to pay, 5 lakh 1 to balance, 5 lakh 1 to balance, total income is 7,20,000. No, so up to 5 lakh we have calculated. So 2,20,000 will be the balance, on that 20% 44,000. So the total tax liability is 56,500. Tax amount it is, tax on total income 56,500. On this he has to pay 4% health and education cess. In every method, in non-resident, resident, non-senior, senior, everyone has to pay 4% health and education cess. That you have to remember. It will not be given you in the question. So 56,500 into 4%, 2,260. So the tax liability, if the assessee is non-resident, 58,760 has to pay the tax. It's clear? Once again I will repeat it. फर्स्ट बिट में अपने को क्या था, अगर मिस्टर वासुदेव रेसिडेंट रहे थे, अगर फॉरेन इनकम भी अपने को क्वेश्चन में मेंशन करें, रेसिडेंट है तो दोनों ऐड करके टैक्स लगता, अगर नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स लगता। दैट यू हैव टू रिमेंबर। इफ फॉरेन इनकम सेपरेटली इट हैज गिवन यू इन द क्वेश्चन, अगर नॉन रेसिडेंट दिए क्वेश्चन में तो आपको फॉरेन इनकम को इंक्लूड नहीं करना रहता, ओनली इंडियन इनकम जो अर्न करे उन्होंने 7,20,000 उस पे ही टैक्स पे करना है। तो 7,20,000 का टैक्स निकाल रहे अपन, 2,50,000 का नील रहता, 2,50,000 1 to 5 लाख, 2,50,000 होता बैलेंस। ये बैलेंस आता है अमाउंट यहाँ पर, ठीक है, 5% 12,500, 5 लाख 1 to 7,20,000 कितना होता बैलेंस, 2,20,000, उस पर 20% 44,000। सो 56,500 टैक्स ऑन टोटल इनकम, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता। सो द एसएससी हैज टू पे, इफ इज नॉन रेसिडेंट अगर है तो उनको 58,760 पे करना है। नाउ लेट्स चेक द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 19 वी हैव डन। नो, प्रॉब्लम नंबर 19, इफ द रेसिडेंशियल स्टेटस is resident, then he has to pay tax on income earned in India and also in foreign country. So the tax liability is 4,04,040. We got the correct answer. Second bit, if the residential status of the assessee is non-resident, then he has to pay tax on the income earned in India only. So on 7,20,000 we have calculated, no? So 58,760 is the tax liability. It's clear now? We got the correct answer both.